मीडिया वेस के प्लेटफॉर्म तो खबरों का लेखा जोखा प्रोग्राम के अंतर्गत आप सबका निੱਘਾ स्वागत है जी आया नो। April 11, 2024, Khabran Da Lekha Jokha program is sponsored by Hanif Litigation. Any criminal or regulatory law matters, contact Hanif Litigation lawyer Shahid Hanif at 604-626-3144. दीदी खबरों की तरफ अगर नज़र डालते हैं तो आज एक अनाउंसमेंट की गई है मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एड्रिन डिक्स की तरफ से, और ये अनाउंसमेंट जो है वो है मेकिंग सिस्टम अपग्रेड्स टू इट्स प्राइमरी केयर स्ट्रेटजी which it says will match patients with primary care practitioners in 4 weeks. ये अनाउंसमेंट मिनिस्ट्री ने एक्सप्लेन किया है कि अप्रैल 17 तारीख से ये डिजिटली मैचिंग प्राइमरी केयर प्रोवाइडर्स जो है ब्रिटिश कोलम्बियंस who are looking for physicians or nurses practitioners have registered through Healthcare Connect. इस अनाउंसमेंट की मंत्राला मंत्री वालों जी अनाउंसमेंट होनी सी दी क्यास कोई की जा रही सी और बड़ी उत्सुकता के नाल इंतजार भी हो रही सी, पर इस दे नाल तकरीबन 3,10,000 के करीब जेडे ने ना मसले सॉल्व होंदे आ, पता इन्हां नूं मसले ही कहांगे। और तकरीबन 68,000 के करीब लोग इस प्रोग्राम के नाल इकट्ठे होए आ ते क्लीनिक्स की भी गिनती काफ़ी ज़्यादा भारी है जेडे कि आपस विच ही कोआर्डीनेट कर सकणगे। और प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट वो लोग जेडे कि डॉक्टर की भाल दे विच ने वो अपने आप नूं इस प्रोग्राम के अंतर्गत रजिस्टर करा के डॉक्टर दे नाल कनैक्ट हो सकते हैं। लंबे समय तो इस गल दी बहुत ज़्यादा मसला सी कि ब्रिटिश कोलंबियन जेडे BC सूबे दे वसनीक ने जेडे उन्हां नूं फैमिली डॉक्टर तो मिलता है नहीं गा। सो उतों कितों हो फैमिली प्रैक्टिशनर नर्स होण जां फिर डॉक्टर होण उन्हां दे नाल किवें कनैक्ट। Bilkul. The toxic drug crisis has torn through communities in British Columbia with thousands of deaths blamed on illicit opioids. And emerging research may add to the divide over how best to deal with the province public health emergency. Researchers behind 2 peer-reviewed papers looked at the possible impacts of BC's Safer Supply program, which provides prescription alternatives to toxic illicit drugs, with 2 studies in international medical journals casting the strategy in different lights. One found the program was associated with a reduced risk of death and overdose and other causes among opioid-using participants, while the other concluded the strategy was associated with a significant increase in opioid overdose hospitalizations across the community. But the authors of the study say the 2 sets of results aren't contradictory. Instead, they ask different questions about the policy which was introduced in 2020. बिल्कुल 2020 वाली ना जी पॉलिसी है इसका जिक्र काफ़ी ज़्यादा वड्डी पद्धर के उत्ते हुंदा, भावें 2016 दे विच अपने हैल्थ क्राइसिस एमरजेंसी जिहड़ी सी सूबे दे विच डिकलेयर कर दित्ती गई सी। कारण सी कि वड्डी पद्धर दे उत्ते गैर कानूनी नशियां दे नाल खाण तो उपरंत लोकां दी मौत हो जाती है। अच्छा ना सूबे च 14,000 तो उपर लोग ने ना जिहड़े ओवरडोज नाल मर चुके हैं। और इहदे नाल इह प्रोग्राम दे नाल इह सीगा भी शायद लोकां नूं ਜਿਹੜੀ मौत की गिणती है घटाई जा सके। तो दूजे पासे कहते ये भी सी कि इन्हां हालातां दे विच हस्पतालों के उत्ते बहुत ज़्यादा वड्डा भार पैंदा उसनूं घटाउण दे लई कीती जावे। पर फैक्ट इज़ वैरी मच क्लीयर कि अजे तक भी ओवरडोज के नाल मरण वालियां दी जिहड़ी गिणती है गैर कानूनी नशे नाल मरण दी वालियां दी गिणती है वो चल रही है, जारी है बड़ी गिनती। वैसे दीदी hundreds gathered outside the Surrey School District building Wednesday evening, hoping keep the Strong Start program operating in the city. This was the second such rally of the week and took place during a meeting of the city's school board. Education advocate Cindy Dalgish was at the gathering and says parents don't feel like they are being heard. I would say there was at least 60 or 70 parents in attendance and maybe even more, and unfortunately they were only allowing up to 60 people in the board meeting audience, she said. Dalgish says the Strong Start program helps children up to the age of 5 with their language skills and social, emotional, physical and cognitive abilities. However, Surrey School says the program is running on a critical deficit. Wednesday's Surrey School Board meeting wrapped up without any discussion about the program. अच्छा ना स्ट्रॉन्ग स्टार्ट एक ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰੀ ਵਰਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੀ ਵਸੋਂ ਹੈ ਔਰ ਨਿਰੰਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰੋਂਗ ਸਟਾਰਟ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਨਵੇਂ ਬਸਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਨੇ
ਦਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਕਮਾ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰੋਂਗ ਸਟਾਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਔਰ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੰਡਿੰਗ ਬਿਲकुल नहीं घटाई है, फंडिंग नहीं घटाई, बसों का वधी है। वेल, सिंधी डालगश के साथ हर एक पेरेंट्स को खड़े होना चाहिए और इस मसले पर आवाज़ देना चाहिए। The parliamentary budget officer says Canada would need to build 1.3 million additional homes by 2030 to eliminate the country's housing gap. The newly released report looks at how many more homes would need to be built to restore Canada's vacancy rate to the historical average. The report by accounts for the number of additional households that would form if sufficient housing were available. Based on those benchmarks, the PBO estimates that Canada would need to build 181,000 more homes a year than it currently does. The report does not take into account recent federal efforts to bolster housing supply of Ottawa's newly imposed cap on temporary residents. The Canadian Mortgage and Housing Corporation says Canada needs to build 3.5 million more homes by 2030 to restore affordability to 2003-04 levels. Estimate is much lower than of the CMHC because he looked solely at closing the gap between demand and supply. The Liberal government has made a string of housing announcements ahead of the federal budget largely aimed at increasing the housing supply. The proposed measure includes billions of dollars in low-cost loans to spur more rental construction as well as infrastructure funding for provinces and municipalities. The government is trying to win back favor with young voters who are increasingly pessimistic about their home ownership prospects and are facing skyrocketing rental cost. ਬਿਲਕੁਲ ਅਸ਼ਾ ਨਾ ਕਿਤੇ 2003 ਤੇ 4 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸੀ ਨਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੀ, ਘਰ ਨੂੰ ਦੇ ਮਿਲ ਸਕਣ ਦੀ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਬਣਾਏ ਦੇ ਲਈ, ਹੁਣ ਕਿਆਸ ਗੋਈਆਂ 2030 ਤੱਕ 1.3 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ 24 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਤੱਕ 2030 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 2003 ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਬਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਿੱਥੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ, ਵੇਚਣ ਲਈ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਉਸ ਦਾ ਜੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਭਾਵੇਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੈਂਟਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਦੇਣਾ, ਪੈਸਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ कि सरकार ये सब कुछ यंग जेडे वोटर्स ने उन्होंने आकर्षित कर लेगा। और इसके साथ साथ एक और खबर जो आई है, द कैनेडियन गवर्नमेंट विल अलाउ 30-year amortization periods on insured mortgages for first-time home buyers purchasing new-built homes. Minister of Finance Chrystia Freeland made the announcement in Toronto today, saying it would take effect August 1st. The Canadian Home Builders Association has advocated for longer amortization periods, saying 5 more years would help with affordability and spur more construction. Freeland also said the government will nearly double $60,000 the amount first-time home buyers can withdraw from RRSPs to buy a home. That's up from $35,000 to take effect April 16, the day the federal budget is set to be released. People who make such withdrawals between January 1st, 2022 and December 31st, 2025 are also getting more time to begin repayment, up to 5 years in total rather than 2. Housing affordability federal ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਆਸ਼ਨ ਐਮੋਰਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 30 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਧਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਥੋੜੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਕੀ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਣ, उस दे प्रति एक उपराला है। बिल्कुल, इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाजत खबरों दा लेखा जोखा प्रोग्राम से। Until next time, goodbye.